So, Tripana Das, can you introduce yourself? Good evening, sir. My name is Triporno Dash. I'm from Haldia, West Bengal. I did my schooling from St. Xavier's School, Haldia. I did my bachelor's and master's in chemical engineering from Indian Institute of Technology, Madras, under dual degree program. I have worked with Hindustan Unilever for their flagship internship program named Unilever Leadership Internship Program, where I worked on the project Future Fit reformulating gel-based toothpaste chassis for sustainable goals. I have also worked with Schlumberger for I have a work experience of 1 year, and I was in the drilling fluid business department posted for their flagship program, field engineering profile. My master's project was done on the topic synergistic advanced oxidation process for wastewater treatment, and I have submitted my work to the journal Chemical Engineering Communication based on my studies, and it is up for review. Thank So, you did your project on wastewater treatment. you. Yes. Most So, with specifically, more Mhm. specifically, I have my project consists of three parts: synthesis of nanomaterials and its utilization for wastewater treatment. Okay. So, is there any application of nanomaterial in wastewater treatment? Yes. So when we talk about wastewater treatment, the current scenario in the research world is we can use advanced oxidation processes and also mass transfer adsorption. So the nanomaterials provides a suitable position in both of the cases because in the nanomaterials we get a high surface area to volume ratio, so that can act as an excellent adsorbent. And secondly, nanomaterials helps in the advanced oxidation processes like ozonation. It can increase the residence time of ozone in a solution, and thereby it can help in the breakdown of uh, more stable what to say textile waste like polyphenols or nitrophenol. Okay. So, is it reduce the oxygen level in the water? So, BOD will how will decrease the BOD level? Yes. So basically, when we are talking about organic waste like polyphenol or some dyes like rhodamine B dye, so we know that this is a very stable structure. Like it has a ring structure. So basically, we have a single bond and a double bond and a resonance stabilization. So it makes it very difficult to for like to break it into carbon dioxide and water. So that's the reason we need a catalyst and a high and a very good oxidizing agent to break it down into smaller, much more manageable particles, and thereby removing it. That's why, yeah, it's my project based on nanomaterials synthesis, which really helped in wastewater treatment. Okay, Manish sir, continue कीजिए. बीटेक का प्रोजेक्ट क्या था आपका? No, only master's project. I did BTech internship with Hindustan Unilever, a research based internship for reformulation of gel-based toothpaste chassis. तो वहां पर आपने हिंदुस्तान यूनिलीवर में क्या काम किया था, उसको थोड़ा सा एक्सप्लेन. So basically, what I did was the business was facing some challenges because the one of the component of the humectants that they were using, like sorbitol and polyols, the prices were rising in the market. So my job was to totally reformulate the chassis so that we can reduce our dependence on this polyphenolic group, sorry, not phenol, poly alcohol groups, or either reformulate or suggest some alternate humectants that can help in the cost management. So that was my problem statement. And how I approached the problem was I totally the first of all I tried to understand why we are using humectants. So we are using humectants because like in the toothpaste it mainly consists of what polymers, and also it consists of like silica as abrasives and as well as thickness. Now the silica has a very high refractive index. Now let's talk about some gel-based toothpaste chassis. To maintain the visuals, we need a very high refractive index humectant, that is sorbitol or any other thing that can match the refractive index of the uh, abrasive in that, and that's why we get a clear gel, like the translucent gel. So that is the charm of the product that they were using. Now, due to the price rise, they had to reduce the sorbitol content to a huge extent.
my job was to do away with it. What I did was I completely removed the sorbitol and I introduced a more radical change. Like we were structuring the water with a cross-linking of polymers. So when we are removing the sorbitol and we are structuring on the base of just polymers, so as a result, so thickening was achieved. Like the well done, the thickening of the toothpaste was achieved. But the problem here again was because we have abrasives, the refractive index, the water couldn't match the refractive index. Now to solve that issue as well, what I suggested was we can reduce the we reduce the abrasive particles a bit, as well as we introduce nano emulsion in the system that took care of the other non-soluble effects like the fatty acids or fatty acid based flavors that we are using. And because of the micro emulsions or the nano emulsion formed, we were totally able to achieve a clean translucent toothpaste. So that was my though. So the two technologies that I suggested them was cross-linking of the polymers and introduction of micro emulsions and nano emulsions in the system. Okay. इन एमटेक प्रोजेक्ट में आपने वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट पर किया था, तो कौन सा प्रोसेस आप यूज करते थे उसको ट्रीटमेंट करने के? Okay, so initially our aim was to do with ozonation, ozone treatment, because it produced hydroxyl radicals. पूरा प्रोसेस बताओ. शुरुआत में सपोज कर लो कि किसी सिटी से एक आपका वेस्ट वाटर आ रहा है, तो उसका प्राइमरी ट्रीटमेंट से लेकर एंड तक उसका पूरा एकदम से प्रोसेस आप मेरे को बताइए. शुरुआत से लेकर एंड तक किन किन स्टेप में होता था, क्या क्या करते थे, A to Z. Okay, so what you were suggesting is कि हम the total process को ये करना, मतलब sorry for my Hindi, to designing the process. But our project was not on the design aspect of things. We took certain pollutants and did batch studies. Like how is the pollutant getting affected based on the ozone treatment. And we didn't work on the scaling up. Our project was mostly पहले स्टेप में ही ओजोन ट्रीटमेंट होने लगता था. पहले तो कुछ उसके जो कि हायर साइज के जो पार्टिकल्स हैं वो प्राइमरी ट्रीटमेंट होता होगा ना पहले तो. हाँ, बट हमने मेरा प्रोजेक्ट जो था वो वेस्ट वाटर ट्रीटमेंट एज अ कंप्लीट नहीं था. कुछ पोल्यूटेंट्स हैं जो टेक्सटाइल इंडस्ट्री से लिबरेट होते हैं, जो ये प्राइमरी ट्रीटमेंट सेकेंडरी ट्रीटमेंट से मतलब जो नॉर्मल ट्रीटमेंट है उससे रिमूव करना बहुत मुश्किल है. हमने डायरेक्ट प्रॉब्लम स्टेटमेंट ये उठाया कि ये जो कंपाउंड्स है जिसका बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड बहुत ज्यादा है, हम टारगेटेड एनालिसिस कर रहे थे कि इसको कैसे हम एक पर्टिकुलर कॉन्सेंट्रेशन लेके उस सोल्यूशन में लिए, एंड देन हमारा कैटलिस्ट इस टारगेटेड जो स्पीसीज है इसको कैसे हम टैकल कर पाएंगे. दिस इज द आवर प्रोजेक्ट वर्क. एंड मेन पार्ट वाज नैनो मटेरियल सिंथेसिस, एक नॉवेल सिंथेसिस अप्रोच देना, एंड वो नॉवेल सिंथेसिस कैसे उस टारगेटेड पोल्यूटेंट को ट्रीट कर रहा है उसका एक मैकेनिज्म देना. कोई इक्विपमेंट यूज करते थे ट्रीटमेंट करने के लिए? यानी इक्विपमेंट नेम उसका बता सकते हैं? ओजोन जनरेटर, we used ozone generator, and we used a lab scale setup of a device named like a glass vessel, ozone generator, and solution, and we directly ozonated the solution in presence of the catalyst in the solution. Okay, जो ट्रीटेड वाटर है, जो ट्रीटमेंटेड वाटर है, आपने जो उसको प्यूरिफाइड कर लिया है, उसको कहाँ पर यूज करते थे? एक्चुअली हम यूज नहीं किए, हमने जस्ट कॉन्सेंट्रेट मेजर किया कि इसका मतलब इनिशियली समझ लीजिए हमारा जो सोल्यूशन था उसका कुछ 200 ppm सोल्यूशन इनिशियल में. आप ये बताइए मेरे को, आपने प्रोजेक्ट किया तो इन जनरली कोई भी सिटी से आपका वेस्ट वाटर आ रहा है तो उसमें कितना ppm पॉल्यूटेंट होता है ये बताइए, और जब आप तो उसको किसी भी प्लांट में जाके उसका ट्रीटमेंट हो जाता है तो फाइनल जो प्रोडक्ट आपका मिलता है उसमें कितना ppm पॉल्यूटेंट रहता है? Okay, so in our case, we studied when we are taking directly from the textile industry, it's around 200 ppm, 200, 300 in that range. Now, when it is treated effectively, it can be reduced to something around 20 to 40 ppm. Sometimes, if you give enough time as well, we can see a very high decrease in BOD as well and COD, and even it can go below something around 10 ppm as well. All right, ठीक है. Tell me the two favorite subjects. Mass transfer and heat transfer. Mass transfer, second one is the heat transfer. All right. In mass transfer operation, you study the distillation column, right? So before the distillation, we are
analyzing the available driving force or maximum separation, what how much we can do, right? तो BLE कर्व हम लोग ड्रॉ करते हैं, तो जो अपना TX डायग्राम होता है उसको क्या बोलते हैं? TX डायग्राम बॉइलिंग पॉइंट कर्व। बॉइलिंग पॉइंट कर्व, उसका फॉर्मेशन कैसे होता है? इन अ डिस्टिलेशन कॉलम हम अगर एक सोल्यूशन को डालते हैं, देन एट द डिस्टिलेट we get a certain kind of product, and we at the bottom we get some kind of like certain composition of the product. We can analyze the composition product and the temperature, and we can draw the TX as well as TY, like the composition of the distillate versus temperature and composition of the bottom product versus temperature. नहीं, हमको तो डिस्टिलेशन में डालने से पहले हमको तो हम लोग तो डायग्राम पहले से ही डिसाइड कर सकते हैं। BLE कर्व तो हम विदाउट यूजिंग डिस्टिलेशन भी बना सकते हैं। तो हम डिस्टिलेशन कॉलम में ना डालें, हमारे पास एक हमारे पास सॉल्यूशन है जिसमें दो कंपोनेंट है, एक मोर वोलेटाइल है, एक लेस वोलेटाइल है, और उसका मुझे TXY डायग्राम ड्रॉ करना है, तो कैसे करेंगे, उसका प्रोसेस क्या है? I can try. I exactly may not be knowing. If we heat the system at a particular at a particular pressure, keeping the pressure constant, if we keep on increasing the temperature, at a certain temperature we will reach where the first vapors are getting formed. Now we can analyze what is the vapor composition in and we can analyze like what is the equilibrium composition, and then we can get the T versus X and T versus Y both. At a particular temperature and pressure, the composition will be fixed. Sorry sir, I can't hear you. आवाज नहीं आ रही सर आपकी, पता नहीं है मेरा प्रॉब्लम। अभी जस्ट चेक, एक बार भी चेक करो, आ रही है क्या? हेलो, हाँ अब आ रही है सर, अब आ रही है। टेल मी द ड्यू पॉइंट टेम्परेचर, व्हाट इज द ड्यू At a पॉइंट? particular, okay sir, at a particular pressure, now if you have a vapor system and we start decreasing the pressure, not decreasing the pressure, decreasing the temperature. Now if we continue decreasing the temperature, we will hit a point where the first drop of dew is formed or the vapor condenses. That is called the dew point temperature. Without decreasing the temperature, can we get the dew point? We can, yes, we can at a particular temperature we can keep on increasing the pressure. Yes, all right, ठीक है। what is the relative humidity? Relative humidity. Yes. Okay, sir. So relative humidity can be given by the formula P water by P water at saturation. So basically, it's the it is the kg of water which is present in the air. So it is the ratio of the kg of water vapor present in the air to the maximum amount of water vapor that the air can hold. That is called the relative humidity. Okay. So drying के लिए रिलेटिव ह्यूमिडिटी इनकमिंग एयर की ज्यादा होनी चाहिए या कम होनी चाहिए? कम होनी चाहिए सर। बेस्ड ऑन द सिस्टम वी वांट टू ड्राई, so there is a layer that is formed which have 100% saturation humidity at the border, but the air का humidity जो है वो कम होगा तो mass transfer better होगा, like the driving force will be better. All right. So relative humidity की maximum कितना वो परसेंटेज होगा इनकमिंग एयर का, सो दैट ड्राइंग होते रहे, उसके बाद ड्राइंग रुक जाए? ओके, तो मैक्सिमम हाउ मच वी कैन यूज रिलेटिव ह्यूमिडिटी ऑफ द इनकमिंग एयर फॉर ड्राइंग? The relative humidity, so it should be less than the relative humidity should be less than 1, like the ratio PA by PA side, it should be less than 1 to have a mass transfer. If it becomes 1, there won't be any mass transfer. All right, ठीक है, perfect. Tell me the difference between dew point temperature and wet bulb temperature. Okay, sir. So if we have a system, according to, like, I will like to answer this question with the help of a psychometric chart. Like in the psychometric chart, if we see a particular let's say a particular absolute humidity. Now, if we
go along the straight line, which basically means that we are achieving sensible cooling without addition of any external moisture or external humidity. We will keep on decreasing the temperature and we will reach 100% saturation line without addition of moisture at a constant pressure, decreasing the temperature. That is called the dew point. Now, also we can follow a different path, that is the adiabatic saturation line. I mean, we can also reach 100% absolute humidity, relative humidity. But that in that process we are adding moisture to the system. That temperature is called the adiabatic saturation temperature, which is same as the wet bulb temperature for air water. Okay, can you define it without using psychrometric chart? Yes, sir. So dew point temperature is basically if you have a system, we are not adding any moisture to the system. We are just at a constant pressure. We are decreasing the temperature. Now, we will reach a particular temperature where the first vapor will starts to condense. That is called the dew point temperature. Now, in case of the wet bulb temperature, what is happening is we have an adiabatic saturation. In case I will answer this for air water system, we have an adiabatic saturator, and we are saying that we are saturating the air by addition of moisture. Now we will reach without any external heat effect. There will be totally there won't be any external heat addition or heat loss, and we will hit 100% saturation point. That is called the dew point temperature, or yes, that is called the wet bulb temperature. It can be temperature at 100% saturation. Yes, like if let's say I will answer it in a other way as well. Like if you have a thermometer and it is covered, the bulb is covered with a wet cloth, and if the air is flowing, with the temperature that it measures is called the wet bulb temperature. Okay. Do you know about what is draft? Draft? What is draft? What is draft in cooling tower or in furnace? What is draft? Sorry, sir, I have no idea. Balanced draft, natural draft. Have you listened about it? No, I have no idea. Okay. So for a combustion reaction, can you explain what is the combustion process? Yes, sir. It's the reaction with yes. So basically, combustion is reaction with oxygen, which results in liberation of energy and heat at high temperatures. If a flame is burning, what kind of reaction is this? I don't really know, but I can make some guesses. Like a flame is burning, like maybe combustion, but I'm not sure. क्या आपको फायर ट्रायंगल के बारे में पता है? What is fire triangle? Yes, sir. Fire triangle, like in order to the combustion to happen, we need oxygen, we need a combusting agent and a supporting agent. So that these three, when they come together, they can form a fire, and it's called the fire triangle. Without the absence of one, cannot necessarily lead to a combustion process. Okay. Can you give the examples in industry where combustion reaction happens? Burning of coal to form Okay. energy, to liberate energy. Can you name the equipment? Furnace. Okay. More example? Have you listened about regeneration of FCC unit? The regeneration unit in FCC, fluidized catalytic cracker. Yes, sir, but I don't really remember exactly. I have heard about it. I don't really know about it. What is cavitation in centrifugal pump? So basically, when the net positive suction head becomes less than 1, what happens is that Less than 1 or less than 0? Sorry, less than 0. I'm really sorry. It becomes negative. So the pumping action becomes difficult, and it can lead to wear and tear of the pumps, and as well as large noises. So this is called the cavitation of the pump. What are the initiatives taken by ONGC in renewable energy sector?
ONGC has been trying to diversify its power consumption sources. It is actively engaging, investing on solar, wind energy, as well as it is also trying to reduce the Scope 1 and Scope 2 emissions. Have you listened about green hydrogen? No, sir. I have no idea. Okay. Sir. Yes. So एक क्वेश्चन है थोड़ा सा प्रैक्टिकल टाइप का। आपके पास सपोज कर लो कि 2 कप ऑफ टी है, ठीक है, 2 कप है, और एक कप में टी का टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है और दूसरे कप में टी का टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है, ठीक है, और सराउंडिंग का टेम्परेचर 10 डिग्री सेंटीग्रेड है। ओके। दोनों कप में 20 डिग्री सेंटीग्रेड जो टी है कप के अंदर, उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड अटेन हो जाए तो वो फास्ट किस में होगा? जिसका टेम्परेचर 80 डिग्री सेंटीग्रेड है उसमें फास्ट 20 डिग्री सेंटीग्रेड पर उसका फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा, या जिस कप में टेम्परेचर 50 डिग्री सेंटीग्रेड है उसका टेम्परेचर 20 डिग्री सेंटीग्रेड फास्ट पहुंचेगा? तो किस कप में तेजी से आपका फाइनल टेम्परेचर पहुंचेगा? इस क्वेश्चन के लिए मैं कुछ assumptions लेना चाहूंगा कि मास ऑफ बोथ टी इन बोथ द कप सेम है, एंड हीट ट्रांसफर, रेडिएशन, कंडक्शन, कन्वेक्शन में होता भी है तो वो नेचुरल कन्वेक्शन जोन में हो रहा है। तो ऑब्वियसली जो ड्राइविंग फोर्स है वो 80 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा है। तो ऑब्वियसली जो इनिशियल जो हीट ट्रांसफर होगा, रेट होगा, वो ऑब्वियसली 80 डिग्री सेल्सियस में ज्यादा होगा बिकॉज ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है। तो आई गेस, मैं श्योर नहीं हूँ, मे बी दैट 80 डिग्री वाला जल्दी पहुंचे बिकॉज उसका ड्राइविंग फोर्स ज्यादा है। बट एट ए टाइम तो 80 वाला भी 50 पे पहुंच जाएगा ना। एक टाइम आएगा जब 80 वाला भी 50 बच जाएगा, तो फिर तो वो प्रोसेस एग्जैक्टली वैसी हो जाएगी। तो 80 वाले में फिर तो मोर टाइम लगना चाहिए ना। बट सर हमको रेट का भी ध्यान रखना पड़ेगा कि वो जो 80 to 50 वो तो जा रेट रहा है, इनिशियल रेट है ना। आप जिस रेट की बात कर रहे हैं वो तो एडिशनल टाइम है। जो रैपिडली कूलिंग हो रही है वो तो एडिशनल टाइम होगा। जो 50 के एक्सेस में जितना भी टेम्परेचर है जिसमें रेट हाई रहेगी वो तो एडिशनल टाइम है, क्योंकि एक टाइम आएगा जब वो भी 50 भी पहुंच जाएगा, देन वी कैन इक्वेट द टाइम। बट 80 to 50 पहुंचने में जो एडिशनल टाइम लगा है उसी में तो रेट फास्ट रहेगी। रेट ऑफ हीट ट्रांसफर को यहाँ पर इन्फ्लुएंस कर सकते हैं, जैसा कि आपने स्टेट किया कि नेचुरल कन्वेक्शन से यहाँ पे हीट ट्रांसफर होगा। क्या आप और कोई अदर कंडीशन बता सकते हैं जो कूलिंग प्रोसेस को बढ़ाने में हेल्प कर सकती है? if forced convection induce करके, like if you can have a fan, if you start a fan, जो या फिर एयर वेलोसिटी को हम इंक्रीज कर दे तो वो जल्दी हो जाएगा बिकॉज H वैल्यू विल इंक्रीज विद इंक्रीज इन टर्बुलेंस। नसल नंबर इंक्रीज होगा, नसल नंबर की वजह से हमारा H इंक्रीज करेगा। सपोज कर लो कि वो दोनों कंडीशंस में सेम है, फोर्स कन्वेक्शन दोनों कंडीशन में सेम है, तो मतलब कौन ज्यादा फास्ट होगा? यस। तो वो एग्जैक्ट कर्व डिराइव करना पड़ेगा, बट जैसे सर ने बोला कि 80 to 50 वो जो अगर पहुंच जाएगा तो उसका एक टाइम है, फिर 50 to ये भी एक टाइम है, बट हमको देखना पड़ेगा वो कौन से ये में वैरी कर रहा है। एक्सपोनेंशियल डीके होगा तो कुछ और, मतलब हम एग्जैक्टली बोलने के लिए वी हैव टू रियली टेक द इक्वेशन। बट हाँ, गुड गुड, एटलीस्ट यू ट्राइड। ओके, ठीक है, परफेक्ट। तो जितने भी बच्चे इस सेशन को देख रहे हैं, इसका आंसर मैं कभी सेशन में बताऊंगा या सर इसका आंसर सेशन में बता देंगे। सभी लोगों से ये है कि आप कमेंट बॉक्स में, जिन भी स्टूडेंटों को लगता है कि ये आंसर इसका होना चाहिए, तो कमेंट बॉक्स में आप लोग इसका आंसर डाल सकते हैं और आप मेरे से पूछ लेना कॉल करके, मैं आपको इसका आंसर बताऊंगा। ठीक है? यस सर, प्लीज कंटिन्यू। हाँ, तो जैसा सर ने बताया, आपको अगर एक और सवाल मैं इसमें एडअप करके पूछूं, जैसे आपने फोर्स कन्वेक्शन का यहाँ पर एग्जांपल दिया। सो जब हम फोर्स कन्वेक्शन करते हैं तो वी ब्लो द एयर, वी फोर्स द एयर। अगर मैं उस एयर को फोर्स करने की बजाय अगर मैं सक करना कर दूं जारी, मतलब अगर मैं फोर्स करने की बजाय, यानी आई एम थ्रस्ट अवे, मतलब अगर मैं पुश करने की बजाय अगर उसको पुल करना चालू कर दूं नेगेटिव प्रेशर क्रिएट करके,
तो क्या दोनों कंडीशन में कूलिंग क्या टेम्परेचर डिफरेंस पे डिपेंड करेगी कि बाहर की साइड में जो ब्लो हो रहा है एयर वो पॉजिटिव ड्राफ्ट में हो रहा है या नेगेटिव ड्राफ्ट में हो रहा है? क्या वो कूलिंग प्रोसेस किस में रैपिड हो सकती है, नेगेटिव प्रेशर नेगेटिव ड्राफ्ट में या पॉजिटिव ड्राफ्ट में? ये समझो कि 99% सर ने आंसर दे दिया है, अब बस आपको कनेक्ट करना है। सर मैं कुछ अच्छे से समझना चाहूंगा। सो वी आर सेइंग दैट कि वो जो मेरा एयर है वो पैरेलल टू द सरफेस फ्लो कर रहा है एंड इसको ऐसे समझ लो, जैसे चाय को हम ठंडा करते हैं तो फूंक मार के करते हैं, वी पुशिंग अवे द एयर, बट इफ वी सक अवे द एयर देन इट कैन पॉसिबल की कूलिंग वहां पर होगी। इन विच प्रोसेस कूलिंग विल फास्टर? तो यहाँ पे मैं ये मानना चाहूंगा कि दोनों ही केस में फोर्स्ड कन्वेक्शन डोमिनेट कर रहा है। तो अगर फोर्स्ड कन्वेक्शन डोमिनेट कर रहा है तो हम अगर व्हाट टू से, अगर हम इक्वेशंस को देखें जो हमारे न्यूसेल्ट नंबर की इक्वेशंस में आता है, तो इट्स बेसिकली डिपेंड्स ऑन द रेनॉल्ड्स नंबर एंड द प्रांटल नंबर। तो बेसिकली दोनों चेंज हो नहीं रहा है इन केसेस। एक में रो वी डी बाई म्यू, neither रो इज चेंजिंग वेलोसिटी। ओके, एट लीस्ट यू हैव ट्राइड, वेरी गुड। सर ठीक है, एक लास्ट क्वेश्चन मेरे साइड से रहेगा, आप ओएनजीसी क्यों ज्वाइन करना चाहते हैं? तो कोई आंसर आप थोड़ा सा सोच लो 1 मिनट के लिए और फिर आंसर करो इसका। तो देखिए, ओएनजीसी एक गवर्नमेंट सेक्टर कंपनी है and ये एस्टैब्लिश हुआ था 1956 में, एंड ओवर द इयर्स इट हैज सीन अ कांस्टेंट ग्रोथ। एंड दिस मीन्स दैट अगर ये ओएनजीसी एक ऐसा ऑर्गेनाइजेशन है जहाँ पे बहुत स्मार्ट पीपल, बहुत हार्ड वर्किंग पीपल एक साथ आके काम कर रहे हैं, तो इफ आई बिकम अ पार्ट ऑफ सच टीम देन आई विल बी एबल टू लर्न फ्रॉम दोज वैरिड एक्सपीरियंसेस एंड एबल टू ग्रो एज अ पर्सन। दिस इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट रीजन कि मैं क्यों ओएनजीसी ज्वाइन करना चाहता हूँ, बिकॉज it is the best company about like on what it is doing. So obviously, as a person, I'll grow. This is one of the most reasons why I want to join ONGC. ये सेम वर्किंग प्रोफाइल आपको अदर पीएसयूज में भी मिल सकती है? Obviously, तो मिल सकती है, but ONGC एक upstream company है. And my past experiences have been that I have been working with ONGC for some segment. Like my previous company, Schlumberger, it was a service sector company for the ONGC. So basically, I have already talked with I have come in contact with a lot of ONGC guys, and I know the working culture of the company, the values they stand for, and so maybe other companies are good, but my first-hand experiences with ONGC is much more diverse, and it provides a wide canvas. So that's why. What is your expectation from the work culture? Teamwork, like we work in a team, we are in it together, and we work as a team and grow as a team. This is what expectations are. Okay. ठीक है, ऑल राइट, बहुत बढ़िया सर। थोड़ा फीडबैक इनको दे दिए जो आपने दिया हो। देखो, एक तो आप थोड़ा सा इंडस्ट्रियल थिंग्स के बारे में चीज़ों को पढ़िए, ठीक है ना। जैसे कूलिंग टावर आप प्रिपरेशन कीजिए, पंप के बारे में थोड़ा और पढ़ लीजिए, और हीट एक्सचेंजर, डिस्टिलेशन कॉलम, क्योंकि ज़्यादातर जो क्वेश्चंस पूछे जाते हैं वो इंडस्ट्री बेस्ड होते हैं इंटरव्यूज के अंदर। क्यों होते हैं? क्योंकि जो ब्रेन आपको वहाँ पर क्वेश्चन कर रहा है ना, वो इंडस्ट्री से आता है। तो उनको बुक्स जो हम पढ़ते हैं वो याद नहीं रहती, उनको वो याद रहता है जिनका उनके साथ एक्सपोजर अभी करंट टाइम के अंदर है। तो वो इक्विपमेंट्स के साथ डील करते हैं। मेजर इक्विपमेंट यही है, फर्नेस, कूलिंग टावर, हीट एक्सचेंजर, पंप, कंप्रेशर, ये इक्विपमेंट्स हैं। इनके बारे में अच्छे से, वाल्व, खास करके वाल्व और कंट्रोल वाल्व, तो ये वो इक्विपमेंट्स हैं। लिक्विड और गैस प्रोसेसिंग के जितने भी इक्विपमेंट्स हैं उनको एक बार अच्छे से देख लेना, क्योंकि वहां से क्वेश्चन हैं वो एक्सपेक्टेड रहते हैं। जैसे आपको ड्राफ्ट के बारे में नहीं पता, जबकि ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, क्योंकि कूलिंग टावर अगर आप पढ़ोगे या फिर आप फर्नेस पढ़ोगे तो आपको ड्राफ्ट के बारे में पता होना चाहिए। नेचुरल ड्राफ्ट क्या होता है, बैलेंस ड्राफ्ट क्या होता है, फोर्स ड्राफ्ट क्या होता है, इंड्यूस ड्राफ्ट क्या होता है, तो ये सब आपको पता होना चाहिए, ठीक है। तो इसके बारे में पढ़ लेना। और बाकी आपका आंसर करने का वे है वो बहुत अच्छा है, कम्युनिकेशन भी आपकी बढ़िया है। आपने जो लास्ट आंसर दिया है वो भी सेटिस्फैक्ट्री है। आप क्यों ओएनजीसी ज्वाइन करना चाहते हो, जो आपने एसोसिएशन बताई ना कि मेरा पहले भी एसोसिएशन रहा है और मैं उसी के साथ एसोसिएट रहना चाहता हूँ, ये बहुत वैलिड रीजन होता है जब आप बताते हो तो। क्योंकि अगर आप पहले से एक सब्सिडरी में भी एसोसिएट हो
तो आप वहां पर ओएनजीसी में पहुंचने का सपना देख सकते हो, वो आपके लिए सपने जैसा हो सकता है। तो ये आंसर आपका वैलिड है। बाकी परफेक्ट आपके ब्राइट चांस है, ठीक है। और थोड़ा सीरियसनेस है वो थोड़ी कम रखना, क्योंकि वो अल्टीमेटली नर्वसनेस में ना दिल झलके, ठीक है। जब आप सामने वाला अगर नॉर्मल क्वेश्चन कर रहा है ना, तो थोड़ा रिलैक्स रहना, क्योंकि ज्यादा कई बार हम सीरियस हो जाते हैं, इंटेंस हो जाते हैं, तो सामने वाले को ऐसा लग सकता है कि नर्वस हो गया है, ठीक है ना। तो बॉडी लैंग्वेज भी बहुत होता है उससे, है ना। बाकी आपके चांसेस ब्राइट हैं, बहुत अच्छा कर रहे हो। बाकी इंडस्ट्रियल इक्विपमेंट्स के बारे में थोड़ा देख लेना, ठीक है। यस सो बाकी सबने सर आपको गाइड कर ही दिया है। बस जब भी आप आंसर कर रहे हो ना, तो थोड़ा फॉर्मुलेशन से बचो, है ना। थोड़ा सा प्रैक्टिकली जब भी उनको एक्सप्लेन करो ना, तो जैसे आपसे पूछा कि रिलेटिविटी क्या होती है, तो आपने फॉर्मूले से उसको रिलेट किया। आपसे जैसे वेट वर्ल्ड टेम्परेचर या ड्यू पॉइंट टेम्परेचर पूछा, तो आप साइक्रोमेट्रिक चार्ट की हेल्प से आप उसको एक्सप्लेन करने लगे। तो विदाउट डूइंग दीज थिंग्स, आप उसको थोड़ा सा प्रैक्टिकली वे में आंसर करने की कोशिश करो, और शॉर्ट में, है ना। कोई भी आंसर ऐसा नहीं है कि आप पता है कि आपको 15 या 20 मिनट का ओएनजीसी का इंटरव्यू होता है ना। तो वो चाहते हैं कि यार 4-5 क्वेश्चन आपसे हो जाएं, थोड़ा इंट्रोडक्शन वाला भी पार्ट रहता है। तो कोई भी आंसर करो तो शॉर्ट में करो, है ना। 2-3 मिनट तक किसी भी आंसर को खींच रहे हो, तो जो पैनल बैठा है ना, तो वो थोड़ा सा लगता है कि यार वो हल्का सा बोर टाइप का होने लगता है ना, कि यार ये क्या चल रहा है, बहुत बड़ा सा आंसर आप उसको लेकर चले जा रहे हो। यस, जब वो आपसे प्रोजेक्ट पूछें उसको आप एलेबरेट कर सकते हो। जब भी किसी भी चीज को वो आंसर पूछ रहे हो, तो उसको शॉर्ट रखो और कॉन्क्रीट रखो, पॉइंट टू ये पॉइंट, वाली सर ने बहुत है ना। अच्छी एक बात ये बोली है। बात, बाकी आप अपने आंसर यस को थोड़ा शॉर्ट रखने की कोशिश करना, क्योंकि आप आंसर से ना बहुत लंबे दे रहे हो, वो बोर कर सकता है सामने वाले को। ये सर ने बहुत अच्छा वैलिड पॉइंट बोला है। हाँ। तो एक तो ये बात, बाकी कम्युनिकेशन आपका बहुत अच्छा है, कॉन्फिडेंट आप दिखते हो, और वैसे हमारे हिसाब से तो बहुत ही अच्छा परफॉर्म करोगे, और होपफुली आप सिलेक्शन लेकर आओगे। ठीक है, ऑल दी ठीक है, बेस्ट। ऑल द बेस्ट त्रिपणा ना। हाँ हाँ, ऑल दी बेस्ट। थैंक यू, थैंक यू। यस, यू कैन लीव, है ना। थैंक यू। हाँ, यस। सो सर नेक्स्ट कंटिन्यू करें क्या?